Hello, ladies and gentlemen. Today we are going to talk about IIM Bangalore overall selection process. We are talking about admission criteria. We are talking about admission process, selection criteria, and different parameters which are important to get into IIM Bangalore. We'll especially be talking about PGP program. That is a 2-year program with IIM Bangalore. So before we start, there are some information regarding IIM Bangalore, which every student who is aspiring for IIM Bangalore must know. First, it is the third IIM to be established in India after IIM Ahmedabad and Calcutta. It was established in the year 1973. The logo, the current logo of IIM Bangalore with this shlok Tejasvi Navdhit Mastu, this shlok has been taken from Taittiriya Upanishad, and which means may our learnings be radiant and enlightening and not give rise to malevolence. So this is commonly asked in interviews and students usually don't know it. So I just thought of sharing this piece of information with you. Moreover, this overall logo came into existence in the year 1994 and adopted by IIM Bangalore. This logo was made by National Institute of Design. Anyways, we'll talk about the most important programs offered by IIM Bangalore. The first is a PGP 2-year program, which is something which I'll be discussing right now. Then we have a PGP PPM, which is Public Policy and Management, usually taken by government officials or people who have a parlance in governance. Then we have Enterprise Management, meant for people who are basically interested into entrepreneurship and enterprise management, and Executive Program, which is EPGP, which actually requires some work to get in. So, and PGP is something anybody can get into. You know, freshers also can try for PGP, which is a 2-year most famous flagship program from IIM Bangalore. Fellowship Program in Management, this is a 4-year doctoral program. And people who are into education, executive education program, this is a kind of certificate programs run by IIM Bangalore. This can range from 2 days to a year. There are different programs under it. So right now, today we shall be talking about the 2-year program, which a lot of CAT aspirants aspire for while preparing for CAT. Now, if we talk about, all right, so this should be IIM Bangalore basically, all right. So the admission process is for PGP, it is CAT and GMAT, the first thing. Then we have second as WAT and PI, and then we have the final selection, right? Mistakenly, I had written here IIM Ahmedabad because the last video which I made was about IIM Ahmedabad. So I should be excused for it, I believe, right? It should be IIM Bangalore out here, all right? So the first stage is CAT and GMAT score. For domestic students, it should be people who are from India should take CAT, and the foreign students should write GMAT, WAT, PI, and then the final selection. But there's more to it. We'll talk about the selection and the shortlisting and selection criteria for PGP stage 1. So the most important thing which we need to see here is students should clear the minimum cutoff. We are talking about this cutoff as per CAT 2020. We are talking about CAT 2020, right? CAT 2021 shortlisting and selection criteria has yet not come. When it comes, possibly we'll discuss that as well. All right. So all the data. This is a disclaimer which I want to give, that this whole data and selection criteria is per CAT 2020. Now, the first eligibility is to secure the minimum cutoffs. The minimum cutoffs would be 80 in general category in VARC, DILR 75, Quants 75, overall 85. So if you have 85 percentile overall and you are in general category, you have 80, 75, 75, you are shortlisted in the first list, right? No other eligibility for the first stage. No other eligibility for the first stage, ladies and gentlemen. For NCOBC, 70, 65, 65, overall 75. Economically weaker section, 70, 65, 65, and overall 75. SC, ST, 65, SC, 65, 60, and 60, overall 70. And ST would be overall 65. The breakup would be 55, 55, and 55. And people with disabilities, 50, 50, 50, overall 60. So this is the overall cutoff. And if you are qualifying the sectionals and the overall cutoff, then the first stage is you have already qualified. This means that CAT score alone, this is a very important piece of information from IIM Bangalore, that this means that CAT score alone will be used as the basis for arriving at the first shortlist. So people have a lot of misconceptions that
you can't even qualify the first stage. You can definitely qualify the first stage if you clear the sectionals and the overall percentile. Let us all move to the second stage. The second stage is something in which we have to understand uh, in a deeper way, basically. Your 10th and 12th board exams, okay? So what happens is, IIM Bangalore has a database of past 2 years who have applied to IIM Bangalore from respective boards. For example, they have the data of UP board students, they have the data of Bihar board students, they have data of CBSE, they have data of ICSE, of all the people who have applied in IIM Bangalore in the last 2 years. Now what they do is they check from the database as to what is the marks of the student who's scoring 90 percentile from that database. Suppose from UP board, or let's say from or let's take an example of UP board. From UP board, say 5,000 people who have applied to IIM Bangalore in the last 2 years. Then they will see as to what is the marks of the student who has got 90 percentile. 90 percentile in the board, right? So 90 percentile will be how much rank? 500 rank 500, right? So rank 500. So they will see as to what is the marks of the person who has got 500 rank in UP board, right? In 10th and then in 12th. Similarly, in Bihar board, CBSE, they'll check whatever board you are in. They will see as to if your marks is, what is your comparative marks with the person who is in the top 10%, right? The 90 percentile, right? So, and what they will do is they will divide your score. They will divide your score with the person who has got 90 percentile. 90 percentile not in CAT, 90 percentile as per the database of the students who have applied from your board in 10th and 12th. Okay, so they will divide the marks, and then they will get a kind of a score, right? So this is what happens in 10th and 12th. So which is a very nice thing, right? For example, they don't give points, they just divide it, and you have the final score. And usually, I mean, for CBSE, if we talk, what will be the percentile of a person who has applied? I mean, a lot of people with 50% also apply, a lot of people with 90% also apply. So the mean which you'll get is 75. And person, if you have got this thing, if you have a decently good score like 85 above, you have a very good chance of having a good score out here. Then the same happens in graduation also, right? Graduation also, they pick it in a similar manner. And professional courses, if you see, in professional courses, no other professional course is eligible for weight under professional course. I mean, people think that they have done a lot of internships, and then they have done a lot of certificate programs, and then they will get some weightage in IIM Bangalore. That is complete misconception. The only professional course which IIM Bangalore gives value is CA, that is cost accounting, chartered accountancy, cost accounting, and company secretary. That means CS, CA, and ICWA, and that's it. Right. So if you have any one of these professional degrees, then you'll get some weightage. If at all you don't have any such degrees, you're not at all eligible, right? I mean, not eligible for this professional course thing. Okay. So you need to understand that. So three parameters, ladies and gentlemen. First, 10, 12. 10, 12, I had already told you, you should have more marks than the person who has 90 percentile in the database of students who have applied from your board in the last 2 years in IIM Bangalore, right? Similarly with graduation and then professional courses, only 3 things, right? So till now, I believe that you would all have a very good understanding of what is happening out here. Now we'll move on to WorkX, okay? So the WorkX, the formula is very simple. Unlike IIM Ahmedabad, IIM Ahmedabad, if you have WorkX from 0 to 11 months, IIM Ahmedabad will not give any value, right? They have no value. But in IIM Bangalore, even if you have 1 month of WorkX, you'll get some points. Even if you have 10 months of WorkX, you'll get some points. How? The formula is 8x. X is the value of the WorkX. 8x is the value. X is the value of the WorkX. So suppose if somebody has got 11 months of WorkX, so 8 into 11 upon 36. If the value of X is between 0 and 36. Okay, so if you have less than 36 months of experience, 8 into 11 months of experience, if at all you have, and then upon 36, and whatever your score is, whatever your score is will be your point. For example, suppose if somebody has got 24 months of WorkX, so 8 into 24 upon 36, so that will be
6 4s are 24, 6 6 are 36, 4 2 2 3. So 8 2s are 16 upon 3. So 16 upon 3 would come to somewhere around 5.3, somewhere around. So this is your point, right? So they will. This is how they calculate it. If you have more than 36 months of work ex, then this will be 8, because this is how you got 8 into 36 upon 36. So this is 8 points, right? So if at all you have more than 36 months of work ex, then you will get 8 straight away 8 points. If you have less than 36 months of experience, then 8 multiplied with your number of experience, number of months of experience, and then divided by 36 is your overall points, right? I hope this is very clear as to how to calculate your points for work ex. Now, IIM Bangalore is very specific about one more thing. A lot of people who apply for work ex, they make fake work experience. They make fake work experience certificates. So while you are being interviewed, what they do is they take they see your work experience into consideration, and then depending on the quality of your work ex, they multiply it with 0.25 or 0.5 or 1 or 1.5 or 2. So suppose if your score is 5 and you have worked with some NGO, some NGO, right? So they know that your NGO certificate is fake, so they will multiply it with 0.25 because they are not very confident about the quality of work ex. So this will come to 1.25, right? So your score will decrease. But if you have worked in some big company, you have worked with some consultancy firm, and you have taken a lot of challenges, and they identify the fact that the quality of work experience is brilliant, then they will multiply this 5 with the highest given point maybe, and you will have 10 points out here. So you see, the quality of your work ex may improve or degrade your overall points in a drastic way, right? So a lot of people think that just having work ex is enough. No, it is not enough, because they know very well if your work ex is fabricated or it is original, right? If it is original, they will value it. If they come to know or they guess that it is you are playing around, then definitely you will have you'll be in a mess. So basically, the number of work months experience you have, the work experience months, and the quality of the experience both will matter when it comes down to IIM Bangalore. So I think this thing is also very clear with all the people. आगे चलते हैं. Component weightage. If you see, CAT component is 40%. 10th board is 20, 12th is 10, and bachelor's is 20. So if you see here, IIM Bangalore is still very specific about your academics, right? They are giving 50% weightage to your academic scores. That means, that's very important. So 50% weightage to your academic score, 40% weightage to your CAT, 50 is in a breakup of 20 10th, 12th, 20 in 10th, 10 in 12th, and 20 in graduation, right? And gender diversity, again, 2 points, but this gender diversity is only for getting a call for the interview. After interview, this is not considered, okay? And work ex, again, 8 points. 8 points, as I told you, is the highest point which you can get. So the total is 100, right? So this is what these points are given. Now this 40 of CAT is divided into three components, okay? You have DILR, you have verbal ability and reading comprehension, you have cons, right? So DILR, out of 40, you have 16 points as weightage. This is 14 points, and this is only 10. So the first priority they give is to DILR. The second priority is VARC, and the third is cons. तो इसमें ये बात समझने वाली है कि कौन सी जितने भी चैंपियन हैं, if you are all you are not focusing on DILR, then things might get very bad for you, right? So you have to be equally good in all the sections, especially DILR and VRC, because this is the criteria and the weightage as per IIM Bangalore, right? All right, fine. So exceptional performers. Now this is a special thing which I think only IIM Bangalore offers. IIM Bangalore says that if at all you are in the top 10 performers in CAT, for example, if you have 100 percentile, and there are only 800 percentilers in India, or maybe 1,000 percentilers in India, then if you are in the top 10 candidates in CAT score, you will get a default call for PI. Your academic score, your work experience will not be seen, and you will definitely get a automatic call for PI, right? Similarly, you are into professional course and you are in the top 10 performers in the country.
who have applied for CAT, who are applied into IIM Bangalore, you are in the top 10 in professionals course, then you will definitely qualify for PI. Similarly, you are in your bachelor's program in commerce, arts, and science disciplines. If you are in the top 10 scorers in graduation, you will definitely get a call for PI. So for exceptional performers, your work X and your 10, 12 graduation things, these things are not taken into consideration. You directly come for an automatic, you automatically qualify for the PI if at all you are in the top 10 candidates in CAT scorers, if you are in the top 10 in commerce, arts, and science disciplines and professional courses, right? So this is, however, you have to qualify this in the interview. This does not mean that you will get weightage in interview also. This only means that you are qualifying for an automatic call for PI. This has nothing to take with your overall call conversion. There's a very high chance that you get an automatic call, you have 100 percentile and you don't fare well in interview, and then you might get rejected, So this is only for getting an interview call. This is not a final call, okay? Now, normalization of scores. So IIM Bangalore's normalization of scores is a very technical process, okay? And people who are bad at maths, they might find themselves in hot water understanding it. Though I am myself a non-maths background student, so I will try to explain you in the simplest way possible, okay? Simplest way possible. You don't have to get afraid seeing this formula. I will make this formula very easy for you, okay? So first of all these scores, all the standardizations is done with reference to the qualifying first shortlist or subdivisions. Subdivisions means this formula is going to talk, for example, if for 10th we have 20 points, for 12th we have 10 points, for graduation we have 20 points, and for CAT score we have 40 points, okay? So everything will be normalized, all these things, and work X also 8 points. So all these things will be normalized. How is it normalized? It is normalized through this process. Normalization means standardization, right? Standardization, so that they have a mean score and they see as to what is the standard deviation from that particular mean thing, right? So चलो इसको समझते हैं थोड़ा सा. मैक्स क्या है? सबसे पहले इस फॉर्मूले को अगर देखेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? ये मैक्स, जीरो एंड मिनिमम. Max, zero, and minimum. First, let's not take this into consideration. Let's just understand this bigger thing, right? So max, zero plus minimum is what the value will be. For example, minimum of this particular thing, okay? So if suppose this value is 2, this is 0, so the maximum will be taken, and then your score will be 2, right? This is 0, this is 5, so they will take the maximum, they will take 5. If this is 0, this is -2, so they will take 0 out here. So they will take the maximum of 2 things out here. Now we are talking about this minimum thing out here, okay? Now let us decode this formula which is given here. Decode this formula which is given here, okay? When we talk about this formula, this is the weight. This is the weight. For example, let's talk about 10th. So 10th का weight कितना है? 20 है. And this is weight by 2. Weight by 2 is what? 10 plus weight कितना था? 20 था. तो weight by 2 is 10 plus यहाँ पे वैल्यू माइनस मीन. यहाँ पे वैल्यू कितनी है? जो आपकी आई है वैल्यू. सपोज आपके 10th में परसेंटेज है 85 और जो मीन है, मीन का मतलब क्या हुआ? सीबीएसई बोर्ड से अगर आप हैं, और मीन का मतलब क्या हुआ कि सीबीएसई बोर्ड से जितने भी बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है उसका मीन कितना है? 10th में सबका मीन कितना है? मीन का मतलब बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है, ऐड ऑल वैल्यूज, सबके जितने भी 10th के मार्क्स हैं उन सबको वैल्यू को ऐड कर देंगे और जितने एप्लीकेंट्स होंगे उससे डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स से डिवाइड कर देंगे, तो उससे मीन निकल आएगा मेरा, उससे मीन निकल आएगा, ठीक है? सो सपोज मीन मेरा 80 है, तो ये 80 हो गया, ठीक है? डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन. स्टैंडर्ड डिविएशन लेट्स अज्यूम कि 5 है, मान लेते हैं हम लोग 5 है. अभी हम बताएंगे आपको कि स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, ठीक है? हम मान लेते हैं कि ये 5 है, ठीक है? उसके बाद इनटू वेट क्या है? वेट क्या था? 20 डिवाइडेड बाय 6, और फिर इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है? इसको कैलकुलेट कर लेंगे और फिर 0 और फिर ये एक पूरे कैलकुलेट करके एक वैल्यू आएगी और इसमें से जो मैक्स होगा वो आपका पॉइंट हो जाएगा. इसका जो मैक्स होगा वो आपका पॉइंट हो जाएगा,
ठीक है, फिर से एक बार और समझिए इसको, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू पीपल वंस मोर सो दैट अगर कोई डाउट हो तो आपके मन में क्लियर हो जाए, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर इसके एक्सप्लेनेशंस पाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो हम लोग थोड़ा इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, मैथ्स और हम लोग पहले ये देखते हैं, ये है और इसको हम मान लेते हैं कि ये पूरा जो है ये पूरा x है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले मैक्स है और ये x है, और इन दोनों की वैल्यू को अगर फाइंड करना हो तो मान लो कि अगर ये इसकी वैल्यू हम लोग बाद में कैलकुलेट अभी करेंगे, ये मैक्स में पढ़ाएंगे, तो अगर मान लो ये 0 है और ये -1 है तो 0 उठाएगा, और ये 0 है 5 है तो इसमें से मैक्स जो होगा 5 उठाएगा, यहाँ पे 5। दिस इज अ फंक्शन बेसिकली, जो लोग अलजेब्रा पढ़े वो लोग समझ जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग x की वैल्यू निकालने पे आते हैं। ठीक है, अब इसको छोड़ दीजिए, ये तो पता हो गया कि आपको यहाँ पे आपके पास 0 है, x है, और जो मैक्सिमम होगा वो आपका मार्क्स आएगा। अब हम लोग x को डिकोड करते हैं। x कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? मिनिमम ऑफ वेट, क्या 10th का अगर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हो गया 20 वेट है, वेट बाय 2, वेट बाय 2 क्या हो जाएगा 10 प्लस यहाँ पे हो जाएगा ओवरऑल वैल्यू क्या है आपका स्कोर 10th का कितना हो गया, मान लो 85% आया है, माइनस मीन, मान लो मीन का मतलब क्या हुआ, 10th के आपके बोर्ड से जितने भी बच्चों ने अप्लाई किया उन सबके मार्क्स को जोड़ दो और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स उसको डिवाइड कर दो, तो आपके पास मीन स्कोर आ जाएगा। सपोज वो आ गया 80 आपके पास, राइट, 80 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, मीन से कितना ऊपर नीचे जा रहा है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं ये आगे मैं बताऊंगा। अभी हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये 5 है, ठीक है, फिर इसको बंद कर देते हैं ब्रैकेट को, इनटू वेट क्या है, वेट कितना था 20 था, तो 20 डिवाइडेड बाय क्या 6, 20 डिवाइडेड बाय 6। अब आपके पास एक पूरा इक्वेशन आ गया। आप इस इक्वेशन को, आप इस पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो उसके बाद से आपको एक इसका यहाँ पे एक 20 है, यहाँ पे एक 20 है, और यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, लेट्स सपोज ये वैल्यू 10 आ गई, ठीक है, तो ये मिनिमम इसका निकालेगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 10 आई है जी, ये 20 था तो 20 हो गया और ये 10 हो गया, और इसको जब वैल्यू को निकालेंगे तो मिनिमम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा यहाँ से बेटा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, तो ओवरऑल जो आएगा x की वैल्यू अगर 10 आ गई है यहाँ पे, तो मैक्स ऑफ 0,10, मैक्स ऑफ 0,10 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो आपको 10 मिलेगा यहाँ पे। अगर यही माइनस में होता तो आपका 0 हो जाता ये स्कोर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है, ये पूरा क्लियर होना चाहिए। वेट कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, 10 को 20 है, 12th को 10 है, ग्रेजुएशन को 20 है, कैट को 40 है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वेट कॉमा इसमें से मिनिमम वाला निकालेंगे, और फिर ये वेट बाय 2 प्लस वैल्यू आपको जो 10th में स्कोर है, माइनस या 10th या 12th जो भी है, प्लस आपका जो मीन है, मीन कैसे निकालना भी बताया आपको, सारे मार्क्स जितने भी आपके बोर्ड से बच्चों ने अप्लाई किया उसको जोड़ दो, उसको डिवाइड कर दो नंबर से, मीन आ जाएगा, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है उसके अभी इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, इनटू वेट, वेट क्या है 20 है, डिवाइडेड बाय 6, ये पूरा इक्वेशन बनेगा, बहुत ही सिंपल इक्वेशन बना। अब यहाँ पे आपको एक वैल्यू मिलेगी, अब 20 और ये 10 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मान लो कि 10 आ गया है, अज्यूम कर लेते हैं, मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, तो 20 है 10 है, चूंकि हमको मिनिमम वाला x की वैल्यू होनी चाहिए, तो 20 और 10 में मिनिमम कौन सा हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसलिए x वैल्यू 10 हो जाएगी, और मैक्स में अगर करेंगे तो 0 और 10 हो जाएगा यहाँ पे फिर वैल्यू, और इसमें से मैक्स पुट करेंगे तो 10 हो जाएगा, अगर ये माइनस में हो जाएगा तो ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। आई होप दिस फॉर्मूला इज वेरी क्लियर। अब आगे देखते हैं कि बच्चे के मन में सबसे बड़ा सवाल ये आएगा कि स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली होता है कि इज द मेजर ऑफ हाउ स्प्रेड आउट नंबर्स आर, ठीक है, सिग्मा से इसको डिनोट करते हैं। द फॉर्मूला इज इजी, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। अब स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस समझने के लिए, वेरिएंस को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा मीन। तो अब देखिए, स्टैंडर्ड डिविएशन को समझने के लिए आपको वेरिएंस समझना पड़ेगा, और वेरिएंस को समझने के लिए आपको मीन समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मीन समझते हैं, फिर वेरिएंस समझते हैं, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन समझेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तब भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि आपके और आपके दोस्तों के पास ये 5 कुत्ते हैं, ठीक है, जिनकी हाइट ये mm में दी गई है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन कुत्तों की हाइट का मीन क्या होगा, तो कैसे करेंगे हम लोग सबकी हाइट को यहाँ पे रखेंगे और सबको जोड़ देंगे, और कितने कुत्ते हैं 5 हैं, सबको जोड़ने के बाद 5 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास ये मीन निकल के आ जाएगा।
मीन आपने अलजेब्रा में पढ़ा ही होगा। ऐसे ही IIM बैंगलोर में अगर मीन को निकालना हो तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। 10th है या 12th है या ग्रेजुएशन है, सबके स्कोर को कैलकुलेट कर लेंगे आपके पूल में, प्लस जितने एप्लीकेंट्स होंगे उससे डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, मीन हो जाएगा। ठीक है, अब मीन निकालने के बाद हम लोग चलेंगे किस पे, हम लोग चलते हैं अब वेरिएंस निकालने पे। वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस जो होता है वो होता है जो भी आपका जो मीन है, मीन से जो नंबर है, फॉर एग्जाम्पल इसकी हाइट 600 थी, यहाँ पे 600 है और यहाँ पे मीन कोई निकला था, मीन कितना निकला था यहाँ पे 394, तो ये जो है ये 394 है और इसका 600 है। तो अगर इसमें से मीन को माइनस करेंगे, इसके मीन इसके टोटल हाइट से मीन को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 206 आ जाएगा। इसका करेंगे तो 76 आ जाएगा, इसको करेंगे तो -24 आएगा, इसको करेंगे तो 36 आ जाएगा, इसको करेंगे तो -94। यानी कि सभी की जो हाइट्स उसकी मीन, उसमें से मीन को माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसको स्क्वायर कर दो। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? ताकि नेगेटिव भी पॉजिटिव बन जाए हमारे पास। ठीक है, ये बेसिकली फॉर्मूला होता है, इसीलिए हम लोग स्क्वायर करते हैं उसको, और उसके बाद उसका हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं। एनीवेज दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। आपने स्क्वायर कर दिया तो नेगेटिव भी वैल्यूज कितनी होगी, सारी पॉजिटिव हो गई। और जो कितना था, 5 थे, 5 नंबर्स थे, 5 से डिवाइड कर दिया, तो जब मीन को सारे मीन यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसमें से मीन को माइनस करिए, और मीन को माइनस करके जो वैल्यू आएगा उसको स्क्वायर कर दीजिए और सबकी वैल्यूज को जोड़ दीजिए ऐसे, और डिवाइडेड बाय नंबर कर दीजिए, जो आपका वैल्यू आएगा वेरिएंस है। और इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। यानी कि ये 21740 आया, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 147। अब 147 जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन है, और 147 जो स्टैंडर्ड डिविएशन है आपको ये बता रहा है कि मीन से इसकी हाइट 147 और इसकी हाइट 147 कम हो रही है, इसकी 147 ज्यादा हो रही है। दैट मीन्स स्टैंडर्ड डिविएशन आपको बताता है कि एक पॉइंट से अलग अलग वैल्यूज कितना ऊपर और नीचे हो रहे हैं नॉर्मलाइज करने के बाद में, राइट। तो इससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि रॉटविलर जो यहाँ पे बड़ा वाला है ये टॉल डॉग है, डैशन जो है वो बिट शॉर्ट है, और डैशन जो है बिट शॉर्ट है। कौन सा लार्ज डॉग है, कौन सा एक्स्ट्रा लार्ज है, कौन सा स्मॉल है, कौन सा मीडियम है, हम इससे मीडियम स्टैंडर्ड डिविएशन से देख सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन की एक वैल्यू होती है, कैसे निकाला होगा उन्होंने। सपोज अगर मेरे को 10th में जितने भी बच्चे हैं, 10th में जितने भी बच्चे हैं, इन सबके मार्क्स को हमने जोड़ दिया और नंबर ऑफ एप्लीकेंट से डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ एप्लीकेंट से डिवाइड कर दिया, तो क्या निकल के आया बेटा, मीन। मीन का भी इस्तेमाल हम लोग कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद हमने जितना भी आपका मार्क्स आया है, जितना भी स्टैंड अलोन मार्क्स है स्टूडेंट का, उसके इंडिविजुअल मार्क्स से, इंडिविजुअल स्कोर से हमने मीन को माइनस किया और उसको स्क्वायर करके सबको जोड़ दिया और नंबर ऑफ एप्लीकेंट से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आया, वेरिएंस आया। इस वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकाल लिया तो क्या आ गया बेटा, हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया। अब ये स्टैंडर्ड डिविएशन का एक वैल्यू आएगा, मीन का एक वैल्यू आएगा, और आपके स्कोर का एक वैल्यू, आपका स्कोर है 1। इस सभी को हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूले में लगा देंगे, इस फॉर्मूले में लगा देंगे, तो वेट तो आपका जो 10th और 12th का होगा वो वैल्यू आपका होगा स्कोर। मीन जो निकला होगा आपके 10th में, 12th के लिए अलग होगा, ग्रेजुएशन के लिए होगा, अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन एक निकला होगा, मल्टीप्लाई बाय वेट अपॉन 6, तो ये ओवरऑल वैल्यू निकलेंगी। इसमें से हम लोग मिनिमम रखेंगे, 0 और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, और उसमें से जो ज्यादा होगा वो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर आ जाएगा। I hope this thing is very clear with all the people. थोड़ा सा मैथ्स इन्वॉल्व है, but I think this is the best explanation I can make in order to explain you people standard deviation also, variance also, and your mean also. ठीक है, तो ये पूरा आपके सामने हमारे पास IIM बैंगलोर का, मुझे लगता है कि आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन वेरी क्लियर नाउ। अगर क्लियर हुआ तो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसा लगा, और IIM बैंगलोर में जो होने वाले जो प्रोसेस स्कोर का उसको कैसे नॉर्मलाइज किया, तो को समझ में आया कि नहीं आया। फाइनल कॉल की बात कर लेते हैं इंटरव्यू के बाद। यहां तक तो हम लोग बात कर रहे थे इंटरव्यू की, अब हम लोग बात करते हैं इंटरव्यू के बाद की टोटल स्कोर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो 25% वेट दिया जाता है आपके कैट के स्कोर को, नॉर्मलाइज्ड स्कोर को। आपके 10th के नॉर्मलाइज स्कोर को 10 पॉइंट्स में रेट किया जाता है, 10% वेटेज दिया जाता है, 12th के बोर्ड्स को 5, तो अगर आप देखेंगे बैचलर्स को 10, यानी कि ओवरऑल 25 हो जाता है आपका
ओवरऑल 25 हो जाता है आपका 10-12 बोर्ड, नॉर्मलाइज होने के बाद कैट में हो जाता है 25, पर्सनल इंटरव्यू 30 पॉइंट्स, वैट 10, वेटेड वर्क एक्स 10, ओवरऑल 100 में आपको पॉइंट्स मिलते हैं जिसके बेसिस पे मेरिट बनती है और फिर सारे बच्चों को ले लिया जाता है, ठीक है। अनलाइक IIM अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद में क्या था देखिए, अपर लिमिट था, ठीक है, कि उससे ज्यादा किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम के बच्चों को नहीं लेंगे वो लोग। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे वो लोग ले सकते हैं। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 89% से 90% लोग जो IIM बैंगलोर में पढ़ते हैं वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए वेटेड वर्कएक्स में भी ये लोग बाजी मार जाते हैं, क्योंकि सपोज कोई IITian है और उसका क्वालिटी ऑफ वर्कएक्स बहुत अच्छा है तो यहाँ पे वो बाजी मार ले जाता है, ठीक है। उसका कैट का स्कोर बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए यहाँ पे बाजी मार ले जाता है। 10th-12th बैचलर्स में अगर नहीं भी है तो भी वो वेटेड वर्कएक्स तो इसके दम पे इंटरव्यू को निकाल लेता है, राइट। और अगर प्रोफेशनल है कोई, जैसे CA, ICW, ACS है, तो अगेन दे हैव दैट एडेड एडवांटेज, राइट। तो 100 में ये सिलेक्शन होता है। और मेरे ख्याल से मैंने सबको समझा दिया है IIM बैंगलोर के सिलेक्शन क्राइटेरिया को, एंड आई एम श्योर यू विल हैव अ वंडरफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ IIM बैंगलोर। अच्छा लगा हो वीडियो, जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आगे कौन सा वीडियो देखना है, किस कॉलेज के बारे में, सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में समझना है, आप मुझे जरूर बताइएगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस कैट 2020 के हिसाब से था। कैट 21 का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया अभी कॉलेजेस डिक्लेयर करेंगे तो हम लोग उस पर भी एक वीडियो बना के समझा देंगे। हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट जरूर हम लोग एक अलग वीडियो बना देंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।